Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of November. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Manohar Lal Khattar, who has released a 50 rupees commemorative coin for NHPC Golden Jubilee. Then we are talking about an MOU that has been signed to boost bilateral trade and industrial cooperation between India and South Korea. Then India has ranked third globally with 65 clean energy industrial projects. Important, take a note of this. We will be discussing this in detail. Then Sweden, it became the world's first cashless society. That means the cash, right, that is being not utilized there, right, everything is being now digitized. Then Kanchenjunga National Park rated good by IUCN, only Indian side to receive such a positive status. All these things and many more will be discussed in this video, students, so stay tuned with us till the end. And students, I want to see maximum students who have not subscribed to us. I want all of them to subscribe to our channel, as it will motivate me to make better content for you in the long run. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. Union Minister Manohar Lal Khattar has recently released a 50 rupees commemorative coin for NHPC Golden Jubilee. What is Golden Jubilee? When we celebrate 50 years of anything, right? Silver Jubilee is when we celebrate 25 years of something. So recently Manohar Lal Khattar has released 50 rupees commemorative coin for NHPC Golden Jubilee. Take a note of this. NHPC, what is it? It is your National Hydroelectric Power Corporation. He also unveiled a comic book here. We will be discussing about this. What is this comic book? This is your Chota Bheem or Bada Band, to teach children and general people about the significance and benefits of hydropower. Right? Band, what is it? Band is basically a dam. Correct. So what things we are talking about? First, a commemorative coin, and second, a comic book were launched here. Very important, take a note of this. And this coin is of 50 rupees as it celebrates the Golden Jubilee here. If we talk about this coin, that is 35 grams in weight. It has 44 millimeter diameter and it features a serrated edge. Correct. This coin is made up of 4 alloys. What are those alloys? 50% copper, 5% nickel, 5% zinc, right? Take a note of this. Correct. And 50% of the content. Next, here you can see everything we talked about. Next is PhD CCI, that is your PhD Progress Harmony Development Chamber of Commerce and Industry, PhD CCI, and Busan Chamber of Commerce and Industry of South Korea. So from India, if we see, it is PhD CCI, and from South Korea it is BCCI. So these together, they have signed a memorandum of understanding that will be boosting the bilateral trade, investment and technology cooperation between the two countries. So we can say the growth between the two countries in trades will be increasing. Also this MOU, it is a marking a major continuation of the diplomatic trade relation between India and South Korea's comprehensive economic partnership agreement, as well as business to business, government to government, government to business initiatives, right, which will be enhancing the trade between these two nations. Next is ITA report. What is ITA? Industrial Transition Accelerator. Industrial Transition Accelerator. Right, this ITA report has been recently released and it is saying that India has ranked third globally with 65 clean energy industrial projects. See students, from the past few years we are seeing that the focus is on clean energy. Focus is on sustainable development goals. Focus is on how we can promote
clean and green sources of energy that various industrial projects, be it any manufacturing or any other project, they should consume green energy or clean energy. Similarly, you must have seen that we talk about steel, right? Even now we are talking about green steel, and even the government is incentivizing both manufacturers as well as the buyers that they shift towards this green steel which is formed from a clean source of energy, right? So here you can see that our country India ranked third with 65 clean energy industrial projects, right? Take a note of this. We are at third position. On top it is China, then it is USA, and then it is our country India. Take a note of this. Then if we talk about this ITA was established at the COP28, Conference of Parties 28, that is a global platform to decarbonize industry and transport, right? Also, here you see that projects that we just talked about, these project clusters are in various states of India. That includes your Odisha, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, and many more. Also, nearly 80% of India's clean industry pipeline, that includes 50% or 50 of ammonia and methanol projects, whereas 30 to 35 million tons per annum capacity they are generating. Correct? Also, students, now we are seeing another clean fuel, that is green hydrogen, right? It is also considered a promising fuel, and we will be seeing that coming vehicles will be utilizing this green hydrogen as a fuel. Moving on to international affairs, Sweden, it became the world's first cashless society, right? It has replaced the physical currency in everyday transaction, and now they have shifted to cashless. As per their Central Bank of Sweden, the total amount of cash including banknotes and coin is less than 1% compared to the GDP of Sweden. So important question. Next, Kanchenjunga National Park has been rated good by IUCN. IUCN is your International Union for Conservation of Nature. This is the organization that releases the red list, right? So IUCN, according to them, Kanchenjunga National Park is considered as good now, right? It is the only Indian natural heritage site that has received such a recognition. Also, this IUCN World Heritage Outlook was recently released during the IUCN World Conservation Congress. It was held in October at Abu Dhabi in UAE. Correct? This latest edition, it has outlooked and addressed almost 271 natural and mixed world heritage sites, and including 231 natural sites and 40 mixed sites across 115 countries. Right, students? Take a note of this. Also, Western Ghat Manas Wildlife Sanctuary, that is in Assam, and Sundarbans of West Bengal, they have been rated as significant concern. Significant concern, right? It is indicating the pressing conservation issue that require immediate action in order to conserve those particular areas, right? So take a note of this. Kanchenjunga National Park rated good, whereas Western Ghats, your Manas Wildlife Sanctuary, and Sundarban, they have been rated for significant concern. Moving on, students, India and Ecuador, they have signed a pact to boost the diplomatic cooperation between the two countries, right? Here you will be seeing various diplomatic cooperation will be enhanced. Also, jointly they have inaugurated the resident embassy of India in Quito, that is in Ecuador. Correct? So here you can see India and Ecuador signed an MOU aimed at bolstering cooperation between their diplomatic training institution in Quito, and also they have jointly inaugurated the resident embassy of India in Quito. Here, both the countries are exploring opportunities to strengthen the cooperation in politics, trade, pharmaceuticals, training and capacity building, and other areas of the shared interest. Moving on, students, to banking and finance. State Bank of India has surpassed 100 trillion rupees in business and has crossed $100 billion market cap for the first time. Important, students, right? I repeat, State Bank of India, that is a public sector bank, they have crossed $100 billion market capitalization for the first time. After its total business including deposits, advances, it has surpassed 100 trillion rupees, right? If we talk about $100 billion companies, it is Reliance Industries Limited, HDFC Bank, TCS, ICICI Bank, and Infosys, right? And this became the 6th company after these companies to achieve such a target. Next,
Junio Payments, they have received the RBI approval for prepaid payment instrument. I repeat, Junio Payment Private Limited, a wholly owned subsidiary of First Pay Technologies Private Limited, they have received the in principle authorization from RBI to issue PPIs, right? Prepaid payment instruments. Correct. Here with this, they will be with here where there will be various financial literacy tool that includes your parent control for spending, RuPay co-branded physical and virtual prepaid cards, then transaction monitoring and allowance monitoring and everything. Also, this will empower the users with seamless transactions, rewarding savings and interactive financial incentives. Next is CUB, that is your City Union Bank. They have partnered with EPFO for Employees Provident Fund Remittance Facility. Right, this will be done through the City Union Bank's net banking platform, and this facility was launched in Chennai, Tamil Nadu by R. Vijay Anand, the Executive Director of City Union Bank, and Manish Agnihotri, the Regional Provident Fund Commissioner of EPFO, Tamil Nadu. Next is Economy and Business students. AEL's KCL and Caravel Minerals, they have signed a memorandum of understanding to fast track the major Australian copper project. So Australia's company Caravel Minerals Limited, they have signed this MOU with Kutch Copper Limited, a wholly owned subsidiary of Adani Enterprise Limited. So from India it is Adani Enterprise Limited subsidiary, that is Kutch Copper Limited, and from Australia it is Caravel Minerals Limited. They have signed a strategic collaboration on the Caravel Copper project in Western Australia's Mission region. As per this MOU, both the companies will explore investment and take off opportunities to fast track development of the project towards final investment decision in 2026 with an expenditure of almost 1.7 or $1.1 billion or 1.7 billion Australian dollar. Right, take a note of this. The target here is to basically procure almost 62,000 to 71,000 tons annually, and this will be for supplying copper to KCL's Kutch Copper Smelter in Gujarat. So here you will be seeing the copper will be transported or will be supplied from the company here to Kutch Copper Smelter, that is in Gujarat. Right, this strategic partnership will establish a framework to negotiate a life of mine offtake agreement that will be covering up to 100% of the Caravel's copper concentrated output, and which is expected, as we just discussed, from 62,000 to 71,000 tons, right, per annum. Next students is awards and recognition. Huron India Philanthropy list was released, and HCL's tech founder Shiv Nadar has topped the list with 2,708 crore rupees donation. Philanthropy is basically helping individuals, right, donating your money, helping in various sectors, be it education, healthcare, right. So to help them to donate this money to make people's life better, here this list is released, and this is Huron India Philanthropy list, where HCL's tech founder Shiv Nadar has secured the top position with a donation of almost 2,708 crore rupees in FY25. Right, if we average this out, this comes out to be 7.4 crore rupees was donated by him on daily basis, on everyday basis. This is an increase of 26% compared to last year. Next, if we see Heritage Food, they have won the Golden Peacock Award, and Vice Chairperson and Bhuvneshwari named the distinguished fellow here. So I repeat, if we are talking about the Golden Peacock Award, correct? What is this Golden Peacock Award? This award is basically Golden Peacock Award. This award is basically established in 1991, and it was instituted by IOD India, that is a professional body that promotes the responsible business leadership, corporate governance and sustainable development. Right, so this award was presented recently to Heritage Foods. Heritage Foods, this is an Indian private sector dairy enterprise, and this award was honored to them by IOD, that is your Institute of Directors India. This was during the IOD London Global Convention on Corporate Governance and Sustainability that was held from 4th to 7th of November in London, UK. Right, students? Next is Bahrain's Interior Minister Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa received the Interpol Medal of the highest order. Important question. Who received the Interpol Medal of the highest order? It was received by Bahrain's Interior Minister Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa. Take a note of this.
right? And it was received from Major General Dr. Ahmad Nasser Al Raisi, the President of Interpol, and Inspector General at the Ministry of Interior of UAE. It was presented during the inaugural Middle East International Border Management and Technology Conference held in Manama, Bahrain. Next, students, next is acquisitions and mergers. M&M, they have sold their entire 3.45% stake in RBL Bank via 682 crore rupees block deal, right? So this 3.45% stake, this includes 2.11 crore equity shares in RBL Bank, that is an Indian private sector bank, through a block deal that is valued at 682 crore rupees. Moving on to science and technology, Indian Navy, they have commissioned indigenously built SVL class ship, that is INS Ikshak in Kochi, Kerala. What is this IVL? That is your indigenously built survey vessel ship, right? Survey vessel large ship, right? And it was commissioned at the Southern Naval Command in Kochi, Kerala by Indian Navy, and this the name of this ship is INS Ikshak. Very important, take a note of this, students, right? Here the ceremony was presided by whom? It was presided over by Dinesh Kumar Tripathi, the Chief of Naval Staff. This Ikshak, it is the first SVL class ship to be based at the Southern Naval Command, right? And the 10th Indian Navy platform commission in 2020, right? This Ikshak is built by whom? It is built by GRSE, that is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited, which is based in Kolkata, West Bengal. See, students, now from Kolkata, West Bengal and Kochi, Kerala, two important questions that I want you all to remember is that Kolkata, West Bengal is the safest city in India, whereas Kochi, Kerala is the most unsafe city of India. Next is India has successfully demonstrated 500 kilometer quantum based network for digitally secure communication. Quantum is when you go very small, right? And we are seeing now the rise of quantum computers, quantum chips that will change the history of communication, as well as it will change how the systems are secured, right? Multiple computation technologies, multiple things will be coming into play. Even recently Google, they launched Willow, that is a quantum chip, and with this they have also launched a algorithm that is supported and proved, that has been basically approved and proved by various other supercomputers and quantum computers also, which is a very good thing, and their quantum chip name is Willow. So coming back, with this we will be seeing that our cyber security will be increasing, and if any individual is using quantum technology for hacking purpose, that is also a different case, right? That is also a security issue, but we can tackle them with this quantum technologies. Now if we see here, India has successfully demonstrated this quantum based network for digitally secure communication over 500 kilometers, right? This network, that is quantum key distribution network, is stretching over 500 kilometer. This milestone, it was announced at the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave, that is signaling a major advancement in countries' quantum secure digital communication, right? What this will do is, this will help us to enable hack proof quantum secure communication in India. Next is important day, students. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict is observed on 6th of November, and this is to highlight the environmental impact of war and conflicts. This is the 24th edition that was observed here on 6th of November, and first time this was observed in 2020. Moving on to National Cancer Awareness Day, observed on 7th of November, and this day is observed to promote awareness about the prevention of care, early detection and treatment of cancer. And here you can see purple ribbon, this is the symbol here for this day, right? This day was first introduced in 2014, observed first time in 2014. Next is 137th birth anniversary of C.V. Raman is observed on 7th of November, right? C.V. Raman, that is Sir Chandrasekhar Venkata Raman, widely known as Dr. C.V. Raman, right? He is famous for his remarkable contribution to the study of light scattering, right? That is also known as his experiment, that is Raman effect, correct? Which explains the scattering of light by the molecules, for which he received Nobel Prize in 1930, Nobel Prize in Physics in 1930. Take a note of this, important. Then he was honored with Bharat Ratna in 1954. Correct? Next,
That's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. And students, again I'm saying I want to see maximum students liking our video, and those who haven't subscribed to us, do subscribe to us, as this will motivate me to make better content for you in the long run. Now let's move to the revision part, students, which is in the MCQ format and will help you in revision of various content that we provide on daily basis. In October, the 8th session of the Codex Committee on Species and Culinary Herbs was held where? It was held in Guwahati, Assam, where Codex stands for vanilla, coriander, dried seeds and large cardamom were finalized. Right? And the total number of global spices standards developed by CCSCH is 219 now. Next, name the entity under Ministry of Electronics and Information and Technology that collaborated with the government of Uttarakhand to organize the Uttarakhand AI Impact Summit in October. So, name that entity. Which entity we are talking about? We are talking about India AI Mission, right? It was organized by the Department of Information Technology along with the government of Uttarakhand in collaboration with India AI Mission, and if the ministry is asked, that is MEITY. Next, identify the type of drug discovered indigenously in India to combat drug-resistant respiratory infections named nephromycin, announced by Union Minister Dr. Jitendra Singh in October. So, what type of drug is this nephromycin? That is in-house developed by India, that is indigenously developed by India. So, this is a kind of an antibiotic. Important, take a note of it, right? And this has been developed in collaboration with Wockhardt, that is a global pharmaceutical company in collaboration with the Department of Biotechnology. Next, identify the indigenous firearm produced by the Indian Army under 2700 crore rupees contract for 4.25 lakh units in October. So it is close quarter battle carbine. This is a kind of an assault rifle, right? And Indian Army has produced this firearm for 2700 crore rupees, and it is how many units? 4.25 lakh units will be procured, and it has also been developed in two segments where you will be seeing 2.5 lakh units will be supplied by Bharat Forge, right, and rest 1.75 lakh units will be developed by and supplied by Adani PLR Systems. Next, mention the institute that signed an MOU with Coal India Limited to establish the Center for Sustainable Energy in October. It is what? It is IIT Madras. Take a note of this, students. Next is, as per the Henley Passport Index released by Henley and Partners in October, India's passport slipped to which position, offering a visa-free or visa on arrival access to 57 countries, while Singapore has topped the list. So India stands at 85th position. So Singapore is having access to 193 countries, that is visa-free, and they are on the first position. Whereas India, we stands at 85th position and we have access to visa-free countries. How many visa-free countries? That is 57 visa-free countries. Next is, mark the correct statement regarding International Union for the Conservation of Nature World Conservation Congress held in Abu Dhabi, UAE. That was held from 9 to 15th of October. If we look at the options here, all these three options are rightly mentioned. Mention the world's first tri-service all-women circumnavigation sailing expedition flagged off by Union Defence Minister Rajnath Singh in December. So what is the name of this? It is Samudra Pradakshina. Important, students. Next, mark the correct statement regarding the State Mining Readiness Index 25 unveiled by the Ministry of Mines. So, what is the name here, right? Or which is the correct statement here? Right option is all three of them. Moving on, in October, UIDAI under MEITY launched SITA. SITA is your Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar. Now, question asked here is, which organization has signed this MOU with MEITY Startup Sub and UIDAI to advance the objectives of SITA scheme? It is NASSCOM. Correct, it is NASSCOM. Now, under this MOU, MSH, right, here they will basically provide technical mentoring, incubation and accelerator support to the startups and innovators here. Right, and here what will be NASSCOM doing? NASSCOM will be providing the connection, industry connection, entrepreneurial support if any required. Then next is, which Indian company has signed a strategic cooperation agreement with Embraer Defense and Security of Brazil during the Vice President of Brazil, Geraldo Alckmin's visit to India in October. If we look at the option here, so which is the Indian company that signed this strategic cooperation agreement? It is Mahindra Group. Right,
take a note of this. And this agreement is basically to provide C-390 Millennium aircraft for the medium transport, that is a medium transport for, or basically this aircraft will be provided for this medium transport aircraft program of the Indian Air Force. Correct. So this is the aircraft that you need to remember, C-390 Millennium aircraft. Next, how much funding has the government of India allocated for the Kapas Kranti mission launched in October to promote high yield cotton cultivation? So what is the amount allocated here? 600 crore rupees has been allocated here. And question can be asked that this Kapas Kranti is related to which crop? It is for cotton. Then an application was also launched, and even this application was launched in Hindi also. Next, in October, the Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare revised the guidelines for per drop more crop scheme. Under the old guidelines of PDMC scheme, what was the maximum funding cap for states and union territories to undertake micro level water storage and conservation projects? So under the old guidelines, what was the limit? It is 20%, right? And now it has been increased to what? This is your 40%. Right, with this, what is it? It will be promoting this per drop more crop, means with efficient usage of water we can grow more crops, right? Quantity of the crops can increase if we are sustainably and managing the water resources properly, and we are in agriculture we are providing the right amount of water when required. Next, students, is our homework section. First question is, tell me recently which edition of India Bhutan border management and security meeting was held, and location also where was this held. Second question, tell me recently which city became the first Indian city with real-time flood monitoring and decision support system, which is the city that, right? First Indian city here. Then third question, tell me recently, if I ask you, Reliance, they have partnered with which company in order to develop AI products in India? Fourth question, if I ask you, students, BRO, Border Road Organizations Project Arunanak, right? It observed which raising day recently? And fifth question, students, recently, if I ask you, which state has imposed a green tax, right, on out of state vehicles, means the vehicles that will be coming out of the states in that particular state, they will be imposed with this green tax. So which is the state, and from which date this tax will be coming into play? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी की। इन्होंने रिलीज़ किया 50 रुपीज़ का एक कमेमोरेटिव कॉइन फॉर NHPC गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली होती है जब 50 साल पूरे हो जाते हैं। देन हम बात करेंगे PhD CCI जो कि इंडिया से है, एंड साउथ कोरिया की बुसान चेंबर्स के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। किस लिए साइन किया गया उसको डिस्कस करेंगे। देन ITA की अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे इंडिया की 3rd रैंक रही ग्लोबली, इसको डिस्कस करेंगे। स्वीडन वर्ल्ड का पहला कैशलेस सोसाइटी बन गया जहां पे सिर्फ 1% ऑफ द GDP जो है वो अमाउंट का कैश बचा है, बाकी वो सब कुछ डिजिटल चल रहा है, राइट? दैट इज अ गुड थिंग, जिससे डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट हो रही है। फिर हम बात करेंगे कंचनजुंगा नेशनल पार्क, इसको गुड कैटेगरी में रखा गया बाय IUCN, इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एंड मेनी मोर न्यूज़ रहने वाली हैं आज की वीडियो में स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने रिलीज किया एक 50 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन फॉर एनएचपीसी गोल्डन जुबली। एनएचपीसी क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसका इवेंट कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। एंड 50 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है, क्योंकि गोल्डन जुबली थी। गोल्डन जुबली होती है जब 50 साल पूरे हो जाते हैं, राइट? तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया। करेक्ट। इवेंट कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। तो पहली चीज़ तो हो गई ये कमेमोरेटिव कॉइन। दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर एक कॉमिक बुक रिलीज की गई, छोटा भीम और बड़ा बांध। बांध क्या होता है? बेसिकली डैम को हिंदी में बांध कहते हैं, राइट? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये कॉमिक बुक भी रिलीज यहाँ पे की गई। टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करेंगे। अगर हम इस कमेमोरेटिव कॉइन की बात करें तो ये 35 ग्राम्स का कॉइन रहेगा, 4 इसमें अलॉय रहेंगे एंड 44 मिलीमीटर का ये डायमीटर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। PhD CCI, ये इंडिया से कंपनी हो गई एंड साउथ कोरिया की कंपनी है बुसान चेम्बर्स। इन दोनों के द्वारा MOU साइन किया गया ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है उसको फ्लरिश किया जा सके एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या होगा? टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा, लॉजिस्टिक सेक्टर, MSME सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर हमें काम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं। ITA रिपोर्ट अभी रिलीज की गई। ITA क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। ये रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे इंडिया की रैंक रहेगी 3rd ग्लोबली विद 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो गए जहां पे हमें मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। उन इंडस्ट्रीज में क्लीन एनर्जी को यूज किया जा रहा है, उन प्रोजेक्ट्स में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को यूज किया जा रहा है, राइट? तो ये इंडिया ने रैंक किया 3rd यहाँ पे ग्लोबली विद 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ITA की ये रिपोर्ट थी। ITA क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। तो इनकी ये रिपोर्ट थी जहां पर हमें ये देखने को मिलता है। तो टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे। एक चीज क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे कि जो ये ITA रिपोर्ट में जहां पे इंडिया की रैंक 3rd रही, ये कब डिस्कस किया गया था? ये बेसिकली, या फिर हम बोलें इससे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये ITA है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये COP28 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट? जिसका 28 सेशन था जहाँ पे इंडस्ट्रीज को, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन के ऊपर बात की गई। इसी के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, जैसे इंडिया की रैंक आ गई 3rd, तो फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना, देन आ जाता है USA एंड देन हमारा 3rd पोजिशन पे है इंडिया। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल न्यूज़। स्वीडन वर्ल्ड की पहली कैशलेस सोसाइटी बन गई है, मतलब यहाँ पे जो बैंक नोट्स एंड कॉइन्स है वो 1%, इट इज़ लेस देन 1% कंपेयर टू द GDP ऑफ स्वीडन। मतलब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, डिजिटली लोग पैसा यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब UPI का यूज़ करते हैं, UPI की मदद से पेमेंट कर रहे हैं, राइट? तो सिमिलरली अगर हम देखें तो जो कैश है, कैश ट्रांजैक्शन है, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है इंडिया में। सिमिलरली स्वीडन का अगर हम देखें वो तो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, अब सिर्फ 1% ऑफ द GDP से भी कम हमें यहाँ पे कैश देखने को मिलता है। मूविंग ऑन, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, इनको रेट किया गया गुड बाय IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्हीं के द्वारा रेड लिस्ट रिलीज की जाती है, जो कि फ्लोरा एंड फ्लोना की जो स्पीशीज है उनको एंडेंजर्ड या फिर वो घोषित किया जाता है, करेक्ट? तो इनके द्वारा यहाँ पे कंचनजुंगा नेशनल पार्क को गुड कैटेगरी में रखा गया है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेटस है इंडिया के लिए, और इंडिया की ओनली साइट है जिनको यहाँ पे इस पॉजिटिव स्टेटस से रिकॉग्नाइज किया गया। ये IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक अभी रिलीज हुआ था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के दौरान, जो कि अबू धाबी UAE में हमें देखने को मिला था। इसी के अलावा 1 2 3 एक्चुअली याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट्स, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, एंड सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है। इन तीनों को यहाँ पे घोषित किया गया एज सिग्निफिकेंट कंसर्न, राइट? इनको रेट किया गया गुड, कंचनजुंगा को इनको रेट किया गया सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया, मतलब काफ़ी कंसर्निंग है। यहाँ पे हमें कंजर्वेशन के एफर्ट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट? एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए ताकि हम इनको कंजर्व कर सकें। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंडिया एंड इक्वाडोर। इनके द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया ताकि डिप्लोमेटिक कॉपरेशन को दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ावा दिया जा सके। इवन यहाँ पे हम देखेंगे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम किया जाएगा क्वितो इक्वाडोर में, एंड क्वितो में ही जो कि इक्वाडोर में है, यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया एंड इक्वाडोर के द्वारा मिलकर जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया रेजिडेंट एम्बेसी को ऑफ इंडिया इन क्वितो। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। SBI सरपास कर गई $100 ट्रिलियन इन बिजनेसेस, एंड इन्होंने क्रॉस किया $100 बिलियन मार्केट कैप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ये छठी इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने $100 बिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस किया है। इसके अलावा अगर हम देखें TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक,
देन इन्फोसिस, करेक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अब आ जाता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये छठी कंपनी बन गई है जिन्होंने ये फीट अचीव करी। मूविंग ऑन, जूनियो पेमेंट्स की अगर हम बात करें, इन्होंने आरबीआई का अप्रूवल रिसीव हुआ फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीआईज के लिए इनको ये अप्रूवल रिसीव हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, करेक्ट। फिर इसके बाद आ जाते हैं सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, इन्होंने पार्टनर किया है ईपीएफओ के साथ फॉर ईपीएफ रेमिटेंस फैसिलिटी। इनकी एप्लीकेशन है सीयूबी नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से ये यहाँ पर ये फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएंगे। सीयूबी, करेक्ट, इन्होंने पार्टनर किया ईपीएफओ के साथ फॉर ईपीएफ रेमिटेंस फैसिलिटी। मार्क करके चलेंगे, इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया था इन चेन्नई तमिलनाडु बाय आर विजय आनंद, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीयूबी के, एंड मनीष अग्निहोत्री, जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ऑफ ईपीएफओ तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे स्टूडेंट्स। अदानी एनर्जी लिमिटेड की कंपनी केसीएल, ये इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। केसीएल होली ओन्ड सब्सिडरी है अदानी एनर्जी लिमिटेड की। इन्होंने एंड कैरावेल मिनरल्स, करेक्ट, इन दोनों के द्वारा, ये कैरामेल मिनरल्स ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इन दोनों के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया फॉर फास्ट ट्रैक मेजर ऑस्ट्रेलियन कॉपर प्रोजेक्ट। देखो इससे क्या होगा, ये जो कंपनी है केसीएल, राइट, सूरत में इनका एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, वहाँ पे कॉपर सप्लाई किया जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 1.1 बिलियन डॉलर या फिर 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, कॉपर यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, राइट, कहाँ पर, कच्छ कॉपर लिमिटेड में, जो कि सूरत गुजरात में रहेगा। एंड 62,000 से 71,000 एनुअली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आते हैं। ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रॉफी लिस्ट अभी रिलीज की गई थी, ह्यूरन इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया। फिलैंथ्रॉफी बेसिकली क्या होती है, जब आप डोनेशन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, राइट, मल्टीपल अदर सेक्टर्स में, तो उसको फिलैंथ्रॉफी कहते हैं। जो लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लोगों की मदद करने में ध्यान रखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एचसीएल के टेक फाउंडर शिव नादर जी ने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद 2708 करोड़ रुपीस का डोनेशन। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, ये FY25 का डाटा है। यहीं पे अगर हम देखें तो 2708 करोड़ रुपए साल के इन्होंने डोनेट किए, जो कि अगर हम देखें तो 7.4 करोड़ रुपीस पर डे के हिसाब से एवरेज आता है। ये डाटा अगर हम देखें तो 26% इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, राइट। तो टॉप किसने किया, यहाँ पे शिव नादर जी के द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया। मूविंग ऑन, फिर आज और एक और चीज़, ये 12th एडिशन है ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रॉफी लिस्ट का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हेरिटेज फूड्स, इन्होंने गोल्डन पिकॉक अवार्ड को जीता यहाँ पे, एंड वाइस चेयरपर्सन एंड भुवनेश्वरी, इनको नेम किया गया डिस्टिंग्विश्ड फेलो यहाँ पर, राइट। तो हेरिटेज फूड्स ने जीता गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है आईओडी के द्वारा। आईओडी क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, आईओडी के द्वारा। आईओडी है क्या, बेसिकली आईओडी है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, एंड आईओडी लंदन ग्लोबल कन्वेंशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिला था 4 से लेकर 7 नवंबर तक लंदन यूके में, जहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, करेक्ट। 11 कैटेगरीज में इनको सम्मानित किया गया। तो हेरिटेज फूड्स डायरेक्टली याद रखेंगे, जो कि एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर डेयरी एंटरप्राइज है, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहरीन के इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, इन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, राइट। इंटरपोल मेडल से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसी में याद रखेंगे इस अवार्ड से इनको किनके द्वारा सम्मानित किया गया, फ्रॉम मेजर जनरल डॉक्टर अहमद नसर अल रईसी, जो कि प्रेसिडेंट है इंटरपोल के एंड इंस्पेक्टर जनरल हैं एट द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ यूएई, इनके द्वारा इनको सम्मानित करा गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। M&M, राइट, इन्होंने सेल कर दिया अपना एंटायर 3.45% स्टेक इन RBL बैंक वाया 682 करोड़ रुपीस ब्लॉक डील। 3.45% स्टेक में 2.11 करोड़ इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, राइट। 682 करोड़ की लागत से इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक सेल कर दिया है। फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। इंडियन नेवी कमीशंस इंडिजिनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज क्लास शिप INS इक्शको इन कोची केरला। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका हेडक्वार्टर है, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। एंड इसकी सेरेमनी जब ये कमीशन किया गया कोची केरला में, इसकी सेरेमनी को प्रिजाइड किया गया बाय एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहेंगे। एंड ये फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है ऑफ, करेक्ट, जो कि सदर्न नेवल कमांड में कमीशन किया गया इन कोची केरला। 110 मीटर्स का इसका लेंथ रहेगा, 18 नॉट्स की इसकी स्पीड रहने वाली है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया 500 किलोमीटर लॉन्ग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर डिजिटली सिक्योर कम्युनिकेशन। राइट, क्वांटम कंप्यूटर से हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो हैक्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, साइबर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी, बट ऑन द अदर साइड हम देखें तो इसी से हम इन चीज़ों को टैकल भी कर सकते हैं। इनसे हम देख सकते हैं जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, एंड जो कंप्यूटेशन है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशन एक साथ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। इवन सुपर कंप्यूटर्स को ये सरपास करेंगे विद अ वेरी लार्ज नंबर। इवन अगर हम देखें गूगल के द्वारा अभी एक क्वांटम चिप्स भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम रहेगा विलो। राइट, इवन इनके द्वारा अभी एक एल्गोरिदम डेवलप की गई थी जो काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि उसको वेरीफाई किया गया है काफ़ी अलग सुपर कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स के जो इफेक्ट्स हैं, राइट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। एंड इस बार हमने इसका 24th एडिशन ऑब्जर्व किया। पहली बार 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था 6 नवंबर में, अब इसको यहाँ पे 2025 में इसका 24वां ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इसका अर्ली डिटेक्शन, इसका ट्रीटमेंट, राइट, कैंसर पेशेंट्स जो उनकी प्रिवेंशन, उनकी केयर, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे आप ये पर्पल रिबन देख सकते हैं, ये इसको डिनोट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं 137th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन सर। राइट, 7 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। आन सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, इनको काफ़ी फेमसली जाना जाता है रमन इफेक्ट के नाम से, इनकी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए, जो कि था स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स। करेक्ट, इनको इसी के लिए रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1930 में। भारत रत्ना से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था। ये दोनों चीज़ें मार्क करके चलेंगे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट पर। ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रही है एंड कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पर। इनको ज़रूर देखा करो, इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको डेली बेसिस पे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग हो सके। इसके बाद आ जाते हैं तोमिची मुरियामा, नॉन फॉर इज 1995 वर्ल्ड वॉर II अपॉलॉजी टू एशियन विक्टिम्स। इनका निधन हो गया 17 अक्टूबर को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के? ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 81st प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये जापान के, एंड 1994 से लेकर 1996 तक थे ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शेन निंग यांग, ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं एंड नोबेल लॉरेट हैं जिनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। Who won the 1957 Nobel Prize in Physics for discovering what? For discovering the parity violation in weak nuclear interactions. फिर आ जाते हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चिंतिस, ये एक पायनियरिंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम। इनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। इन विच ईयर इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पद्मा भूषण से इनको 1985 में सम्मानित करा गया था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑल्सो। इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब? 23 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट, किस कंट्री ने गिफ्ट किया प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स को टू इंडोनेशिया टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137। मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए, रेडिएशन से टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री ने, ये गुड जेस्चर है इंडिया का कि हमने ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट की टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस फिनटेक कंपनी ने अनवेल किया इंडिया का पहला यूनिफाइड कॉर्पोरेट एंड इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस इन अक्टूबर मंथ। तो कौन सी फिनटेक कंपनी रहेगी? वो है एनकैश। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने रिसीव किया BIS सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पूछा जा रहा है BIS की फुल फॉर्म हमने यहीं पे देख ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टील। तो ब्यूरो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक 2-सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर। तो मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अनवेल किया ये एयरक्राफ्ट, तो महिंद्रा एरोस्पेस के, तो ये पुलिनाम एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया, मार्क करके चलेंगे। इवन विप्रो के द्वारा स्टूडेंट्स अभी एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है, वो भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ फ्रॉम 6 to 9 ऑफ दिसंबर, होगा फ्रॉम 6 to 9 ऑफ दिसंबर। तो कहाँ पर होने वाला है ये 11वां एडिशन? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। इंडिया, ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर के महीने में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया स्लोवेनियन टाउन ऑफ ब्लेड को एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी यूज्ड इन स्लोवेनिया? तो यूरो का ऑफिशियली यहाँ पे यूज होता है एंड ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है 2025 की। किन को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन? वो है शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा? 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर? वो है सनाए तकाइची। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया? तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक? तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन, जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक? 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट्स नासिक फैसिलिटी। तो वो फाइटर जेट कौन सा है? वो है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर आ जाते हैं, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का बिड टू होस्ट द सैनिटरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम, जो 2030 में हमने बिड किया था होस्ट करने का। कहाँ पे होस्ट करने की बात की जा रही है इसको? अहमदाबाद गुजरात में। इवन हमने 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया है। लेट्स सी वो कैसे प्ले आउट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया एज द टॉर्च बियरर। तो आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, वो कौन सा रहेगा? वो है मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बाद आ जाते हैं उस कंट्री को, नेम दैट कंट्री जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट एवर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग अर्जेंटीना बाय 2-0 इन द फाइनल मैच, जो कि सेंटियागो चिली में हमें देखने को मिला। तो नेम दैट कंट्री, वो कौन सी कंट्री रहेगी? वो है मोरक्को। इसके बाद आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनेबल किया सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द इलेक्शन कमीशन इंटरनेट, जो कि है ECI-NET। ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये वो प्लेटफॉर्म है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस को रिपोर्ट करने का काम करेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ECI इस्टेब्लिश कब किया गया था? राइट, तो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिपोर्ट करने के लिए ECI-NET लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इसरो ने बेसिकली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 6.5 टन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? ब्लूबर्ड 6 ये सैटेलाइट का नाम रहेगा। ये बेसिकली कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगी, एडवांस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में। 6.5 टन इसका वेट रहेगा। पूछा जा रहा है हु इज करंटली सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो कौन सर्व करते हैं द चेयरमैन ऑफ इसरो? वी नारायणन यहाँ पे सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का गोल्ड रिजर्व क्रॉस्ड 880 मेट्रिक टन्स बाय सितंबर, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन RBI's रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। नेम द करंट गवर्नर ऑफ RBI हु ओवरसीज दिस अचीवमेंट। तो कौन है करंट गवर्नर? वो है संजय मल्होत्रा। Next students is our homework section. First question is, tell me recently which edition of India Bhutan border management and security meeting was held and location also where was this held. Second question, tell me recently which city became the first Indian city with real-time flood monitoring and decision support system, which is the city that, right? First Indian city here. Then third question, tell me recently, if I ask you
Reliance. They have partnered with which company in order to develop AI products in India? Fourth question, if I ask you students, BRO, Border Road Organizations Project Arunanak, right? It observed which raising day recently? And fifth question, students, recently, if I ask you which state has imposed a green tax, right, on out of state vehicles, means the vehicles that will be coming out of the states in that particular state, they will be imposed with this green tax. So which is the state and from which date this tax will be coming into play? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.